We hope you enjoy all the components of the summit, designed to portray the vast array of environmental issues, indigenous conservation efforts, sustainable traditions, and even unique culinary delights of our region. Just a para about today's summit. The Northeast Green Summit aims to conserve the natural and cultural heritage of Northeast India by bringing together stakeholders from all walks of life to deliberate and design effective solutions to some of the unique environmental challenges being faced in the region, with the underlying theme of Green Northeast, Clean Northeast. Well, with this, let us move to our program. We know we are all delayed a bit by the time, but still, nonetheless, let us give a kick start to the program. And for that, I would like to welcome all our dignitaries of this session, paper presenters, guests, chief guests, chairmen, sir, keynote speakers, panelists, and even all the students. May I please invite all our dignitaries to take their seat. Today, for the session, we have with us Sir Gopal Arya, All India Convener, Paryavaran Sanrakshan Gatividiti. Please give a huge round of applause. He will be our chairperson of the day for the session. We also have with us Ms. Lisi Priya Kangujam, environmental activist and special envoy of Timor-Leste. Please give a huge round of applause. I would like to call on the dais Sir Mohammed Afreen, consultant Ecoveda Climate. Can we also have on dais Dr. Chandan Tambuli, Director NEES. We also have with us Dr. H.D. Lalrem Senga, HOD, Department of Zoology, Mizoram University, who will be joining us today online. So let's give a huge round of applause for him as well. Of our Mother Nature with love and respect. The climate disasters there will be. If there is no nature, then there will be no food. If there is no nature, then there will be no growth. If there is no nature, then there will be no security. And if there is no nature, then there will be no future for us. You see, millions of children like me are losing their lives, losing their parents and their homes due to climate disasters. This is real climate emergency. And sacrificing the lives of the millions of innocent children for the failures of our leaders is unacceptable at any cost. I want to send a small message today to war-loving nations like America, that instead of spending billions of dollars on wars, if we spend it on ending poverty, giving education, and fighting climate change, then what a great place, then what a wonderful place our earth would be. I'm coming here today to tell our leaders of Northeast India to enact a climate law to deliver climate justice to the poor vulnerable people who are already the victims of today's climate change, so that we can pay for the loss and damage caused by the climate crisis to these poor people. My country, our country India, is facing lots of environmental issues such as the floods, droughts, heat waves, cyclones, locusts, air pollution, etc. at the same time. These are all the impacts of the climate change. We must stop the palm oil projects from the ecological fragile region of the Northeast India and shift it to some other region of India. I personally had experience of how this monoculture plant is destroying the livelihoods of the thousands of people in countries like Malaysia and Indonesia, devastating their entire region with land degradation, pollution of nearby water bodies like lakes,
rivers, etc. You see, latest IPCC report clearly mentions that climate crisis is caused by human activities. But it's really caused due to the lack of political will by our leaders. Real problems are not the global warming, climate crisis, environmental destruction, or animal extinction. The real problem is us, the human beings. These problems are all caused by the symptoms and byproducts of us, the human beings. And deforestation must be an international crime now. Our leaders still don't panic about the climate crisis. What they panic is throwing a tomato soup on a sunflower art and arresting, silencing the voice of the environment and indigenous rights activists who are defending our planet. One thing I would like to say to our leaders today, that there is no value of an expensive art, luxurious car, a beautiful home, or a lot of money on a dead planet. Young people should, no, must hold lawmakers accountable for their political decisions. Climate education must be mandatory in every school education curriculum, in every country of the world, to fight climate crisis from the grassroots. Because there will be no climate solution without climate education. Our governments must work together to manage a just transition away from coal, oil and gas, the top causes of today's climate crisis. We just need to change our behavior to save our planet. We have to fight together to make sure the rich nations, the rich countries, pay not in millions but in billions now for the loss and damage that they are responsible for, that they have caused to the developing countries like us. Today's global climate crisis is caused by the rich nations, and we are just the victims of it. Remember, there will be no climate justice without climate finance. We deserve climate justice now. I have a dream where there are more bicycles on roads instead of more motor vehicles. I have a dream where there is no coal power plants and thermal power plants and is replaced by clean renewable energies. I have a dream where all children living in this world have the basic rights to clean air to breathe, clean water to drink, and clean planet to live. And asking clean air to breathe, clean water to drink, and clean planet to live is all our basic rights. Remember, your action today will decide our future tomorrow. My generation, we are already the victims of today's climate change. And I don't want my future generations to face the same consequences again. We will not allow history to be written by big polluters and greedy politicians who choose profit over our own planet. It is our duty to protect our Mother Nature from those who refuse to see her beauty. You can call me crazy, but I believe that we should have the basic rights to clean air to breathe, clean water to drink, and clean planet to live. We will continue to fight until we achieve our goals. We are unstoppable, another world is possible, and change is possible. Well, a lot of people talk about freedom, but what is real freedom? Freedom is when you can protect your land and environment. Freedom is when you can protect your children's future, culture, and health. Freedom is when you can read and write. Freedom is when you're out of hunger. Freedom is when nobody discriminates you on the basis of caste, creed, color, sex, or any other differences. Freedom is when we are all together in this fight. Fight for your freedom. Thank you. Jai Hind. Sanalipak Manipurna Yaifare. Thank you once again. And please pray for peace for my birthplace Manipur. बहुत बहुत धन्यवाद.
I must say that was indeed very encouraging, enlightening, and definitely very challenging. All our prayers are with Manipur. Next on stage, I would like to call Sir Mohammad Afreen, consultant Ecoveda Climate, to share his few words with us. Good afternoon, everyone. I did not expect that I would speak in front of you, but I'll keep it very short. The idea of climate action requires involvement of each and every person, and it has to come from the ground up. So what we are trying to do from climate action programs that we are trying to create is to involve farmers at a very from a very starting level, and involving them in creating a environment where they are also responsible for not only in climate action, but also towards creating income for them. Because without income, farmers will, or anybody else, because their main aim is livelihood. So any program on climate action, if it is not related or connected to livelihood, then it becomes very difficult to carry forward. So there are different types of climate action programs like plantations, where you need to involve people planting trees. For example, in Arunachal Pradesh itself, you have vast areas which have been deforested, which is resulting in silt deposition down the stream in Assam. And it will be very harmful for Arunachal Pradesh in the future also. So what needs to be done is to involve the people of Arunachal Pradesh for planting in climate action programs that can not only sequester carbon dioxide, because the IPCC in the Paris Agreement, there was an agreement that voluntary agreement that we have to reduce the the temperature can go up to only 1.5% by a certain years in the future. So, which will be very difficult unless and until you do plantations as one action. All Ms. Kanjuman, where she said about coal plants, diesel cars, or other actions that also needs to be taken. Those are all different different pieces of the puzzle. So plantation, I'm from an agricultural background, so I talk from the agricultural point of view. So plantations that will sequester the carbon, and then planning agricultural project like alternative wetting and drying methods, or using azolla, or producing by growing more C4 crops. C4 crops are like maize, millets. They have the capacity to absorb more carbon dioxide. So, so these are all pieces of the puzzle that everyone has to play at the ground level, and slowly actions will turn into results. So I hope if anybody needs has any questions, they can ask during the discussion period about how agriculture can be involved in climate action. So with that, because it was a sudden, I didn't expect
this speech to happen. So I have been prepared for it, and thank you for it. And that's all. Thank you. Bye. Thank you so much, sir, for your... Dr. Chandan Tamuli, sir, Director NIST, to share his few words with us. So, good afternoon, everybody. First of all, I would like to thanks to the organizing committee for giving me the opportunity for involved in these panel discussions. So, actually, I am not director of CSR Northeast Institute of Science and Technology. I am senior principal scientist and in charge of this NIST branch Itanagar. Actually, this program, this is much needed for this current situations of this world. Actually, today this Northeast Green Summit, it is very much needed. Today, Honorable Speaker P.D. Sona and Mama Natung sir, they rightly said what is going on here or what is the present situation. So whatever we have seen here today, Mama Natung, he is the Forest and Environmental Minister. He rightly said about the standard of the air gun. Actually, we have observed. I have completed around 18 years in Arunachal Pradesh. I have seen. So people, they want to hunting, especially for birds and other things. Now it is really the scenario has been changed slowly. Even in our campus, this is just I want to cite one example. Even in our campus, in 5 years ago, there are lots of people are coming for hunting the birds. Actually, we are totally disagree, and even if we told please don't do this activity, but they don't try to listen because they want to anyway they want to hunting the birds, but they will get only suppose maybe single birds for using around the 10 this bullet or something like that. So they don't think about that matter, but it is very serious matter, a very important matter. Now that time is changing. Now some of the colleague, some of my friends in from Tawan districts. So recently we visited the Tawan districts. So they actually told me. So nowadays the bear is coming and roaming here and there and inside the campus or something like that. So it is a very positive things and it is a very good things. So now actually this is changing little bit, so by step by steps. So it actually that campaign is very important step taken by the government of Arunachal Pradesh. So regarding the climatic change, I want to say one thing. First of all, we should teach our children how to love nature. Actually, they should be involved. They should be from our own step. We should take the first initiative, because if they plant one flower and one tree or anything, so step by step they will feel that it must be there, and we should start from ourselves, from our home. It is very much important. So we can talk lots of things and very big things, but in the platform or in audience, it is very difficult. It is very easy to talk. But if we take the step from our home, from myself, so it is we should think that way. I feel. Actually, this is my personal feeling. So I feel we should go that angle. Then slowly, then everything will be realized, and we should provide the awareness and from government level or NGO level, whatever possible. So, Madam very rightly
told very important point. So we should follow that steps, and they are very experienced and knowledgeable, I feel. So we should follow their steps, and we should follow them. And regarding I am from actually chemistry background. I am working in the medicinal and aromatic plant. So whatever I have seen here from my experience, if we take one medicinal plants, most of the plants are unexplored. So in Arunachal Pradesh, I am working lots of different medicinal plants for different evaluation of the biological activity and isolation, structure elucidation or something like that. So most of the plants are unexplored. Suppose if we don't pick up that plant, or it may be vanished, or in future it may not be possible to get such kind of plant. And actually, that such kind of plants have very significant importance of their medicinal value, and it may help in future humankind. So it is very important to conserve such kinds of plant, and then medicinal, aromatic, and economic plant. So recently we are working one plant that is Erenga westernity. It is locally known as Tase. Most of the local people, they know very well Tase. So this is very important economic plan. So actually, from time immemorial, local there people they using as a substitute of the rice or wheat or something like that. So if you take this, I have found all medicinal importance and energy value and all things. So I have observed that energy value is better than rice and wheat, etc. And it has very significant medicinal importance also. So, but unfortunately, actually, the people they collected this plant from the actually wild forest. But if they collected continuously, then definitely it will you will not get such kind of very important medicinal or economic plant. So it must actually conserve such kind of plant. But I am giving just simple one example from my experience. So there are lots of such kind of medicinal plant. So when I first visit their site, then we have observed a lots of plant. Now they are cutting and selling the product actually continuously. So it is definitely will not get such kind of important plant. So it is all these things is related with the climatic change and forest and environment. So thank you very much. Thank you all of you. Thank you so much, sir, for your kind suggestions. And yes, we do believe that to bring Sanrakshan Gatividity to share his kind words. सभी को नमस्कार। सभी एक बार जरा जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय तो अच्छे से बोलिए, भारत माता की जय। नहीं, हम नेट जीरो में बैठे हुए हैं तो मुझे लग रहा है कि उसका फील नहीं आ रहा है। अभी जरा अच्छे से बोलेंगे, भारत माता की जय। अब ठीक है। देखिए, भारत माता की जय बोलने में भी हमको कितना कोशिश करनी पड़ रही है, लेकिन सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ ये नॉर्थ ईस्ट समिट, जिन्होंने इस प्रकार का एक जो वर्निंग इशू है हमारे देश में, अपने देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर, कि जिसको एड्रेस किया। और एड्रेस भी कहाँ किया? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में भी अभी जो हमारी ये समिट हो रही है, ये हो रही है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर सबसे अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं उस दिल्ली से अभी आ रहा हूँ कि जहाँ दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 500 है। कैन यू इमेजिन? जहाँ पर 50 to 70 होना चाहिए, वहाँ 500 है।
आई थिंक यहाँ पर तो 50 से भी कम होगा, मुझे नहीं पता क्यों। लूसी क्या कहना है? काफी दिल्ली से आई हूँ। ओह देन यू आर ओके, और मैं यू फील इट। डाइस पर बैठे हुए हमारी यंग एनवायरमेंटलिस्ट लीसी, सॉरी आपने भी बोला, मुझे लग रहा था कि एक युवा की जो दिल का दर्द है वो हमारे सामने आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। और जब हमारे दो लोगों ने बोला, एक ने किसान को एड्रेस किया और एक ने मेडिसिनल प्लांट को एड्रेस किया, लेकिन हमको कुछ विचारों का चिंतन करना पड़ेगा। मैं शायद थोड़ा इससे हटकर कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की आज स्थिति ऐसी क्यों आ गई, इस पर हमको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। मैं कुछ डाटा भी दूंगा, लेकिन चूंकि समय कम है तो थोड़ा जल्दी से कुछ मेरी बातों को कहना चाहूँगा। आज से मैं 3 इंस्टेंसेस, घटनाएं आपको बताता हूँ। पहला, एपीजे अब्दुल कलाम एक अपना भाषण डिलीवर करके जा रहे थे। एक 12 इयर्स यंग गर्ल उनके पास आके बोलती है कि सर आई वांट टू बिकम ए पैट्रियट, मुझे देशभक्त बनना है। देशभक्त बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एपीजे अब्दुल कलाम उस छोटी सी बेटी से कहते हैं टू प्लांट ए 2 ट्री। क्या 2 ट्री लगाना देशभक्ति है? क्या पैट्रियटिज्म है? ये एपीजे अब्दुल कलाम ने उस बच्ची को क्यों कहा? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, मेरा किसी कोस्ट गार्ड के कमांडेंट से बात हो रही थी, मैंने कहा कि अभी तो बड़ा चर्चा में है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप इस देश का पेरिस, तो कहा कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है वगैरह, बहुत अच्छा क्लाइमेट वगैरह। मैंने पूछा उससे कि क्यों है ऐसा? आपको आश्चर्य होगा, वो कमांडेंट कहता है कि वहां पर आज तक इंसान नहीं पहुंचा है, दैट्स व्हाई दैट प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या जहां पर इंसान पहुंचता है वहां पर क्लाइमेट चेंज हो जाता है क्या? ये दूसरी बात हमको सोचने की होगी। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्या इस क्लाइमेट को आज से 250 इयर्स पहले का अगर विचार करते हैं, जो लाखों वर्षों से क्लाइमेट चला आ रहा था, उस समय तो क्लाइमेट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। केवल 250 वर्ष के बाद ये क्लाइमेट चेंज क्यों आया, ये हमारे लिए चिंतन का विषय है। उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन हमको विचार आज करना पड़ेगा इस क्लाइमेट को चेंज। और इसको सबसे ज्यादा प्रदूषित जो कह सकते हैं कौन करता है? तो इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई इस क्लाइमेट को चेंज करता है तो वो ये इंसान है, जो लीसी ने कहा कि इसके प्रॉब्लम ये ह्यूमन है। और आपको आश्चर्य होगा, इस पूरी यूनिवर्स में ये इंसान का परसेंटेज कितना है? तो इस इंसान का परसेंटेज है 0.01%। 99.99% इस पूरे यूनिवर्स को अगर कोई खत्म कर रहा है तो वो है ये 0.01% ह्यूमन, यानी हम लोग। अब विचार करना पड़ेगा कि अगर हमको क्लाइमेट को बचाना है, जो इस चैलेंज को करना है, उसको करने के लिए 0.01% इंसान को बदलना पड़ेगा। ये पहली बात है। और इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ डाटा जिस बात के लिए दे रहा हूं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है उसकी शुरुआत कहां से है? क्या कोई बता सकता है? जो हम पानी की बोतल, पेट बोतल जिसको बोलते हैं, उस पेट बोतल को, पेट बोतल पर डे नहीं, पर मिनट हमारे इस देश के अंदर, भारत के अंदर कितनी निकलती है? कोई बता सकता है? यहाँ पर मिनट पेट बोतल जो हमारी होती है 1 लीटर टू हाफ लीटर वगैरह, पर मिनट कितना जनरेट होती है? कोई बता सकता है? शायद नहीं। मैं बता देना चाहता हूं कि पर मिनट इस देश के अंदर 10 लाख 1 मिलियन बोतल्स पर मिनट इस देश में जमीन पर गिरती हैं। हम कैलकुलेट कर रहे थे कि 24 आवर्स में ये कितनी हो जाएंगी, तो आपको आश्चर्य होगा 24 आवर्स में इस देश की पॉपुलेशन के बराबर 150 करोड़ बोतल पर डे। अगर 50% मान लें रात को नहीं निकलती होंगी, तो इस देश की जनसंख्या के आधी जितनी बोतल होती है उतनी 75 करोड़ इस जमीन पर गिरती हैं। ये जमीन और नेचर क्या कर सकती है? प्लीज माइंडेड।
नंबर 2, आपको जानकारी होगी कि जब हम अपने घर में दूध की थैली आती है तो उसके कॉर्नर कट करते हैं, कोई पाउच आता है तो उसको ऐसे फाड़ते हैं, आपको ध्यान में होगा वो छोटी सी कटिंग जो कट पीस होता है, इस देश में पर डे कितनी जनरेट होती है? आपकी जानकारी के लिए वो छोटे छोटे कट पीस हैं जो इस जमीन पर गिरते हैं, उसको कोई उठा नहीं सकता। वो इस देश में 1 लाख मैट्रिक टन पर डे जमीन पर गिरते हैं। जमीन पर गिरने के बाद उसको कोई उठा नहीं सकता, तो वो वहां पर माइक्रो प्लास्टिक्स में बदल जाते हैं, एक लेयर बन जाती है। जमीन के ऊपर लेयर बनने के कारण पानी नहीं जाता है, पानी जब नहीं जाता है तो धरती प्यासी मरती है। लोग कहते हैं धरती फट रही है, कहां जाएगा? कौन कर रहा है ये? कौन फेंकता है उस छोटे उसको? क्या हमको इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। और तीसरी बात, आपको पता है पर कैपिटा ट्रीज एज पर WHO नॉर्म्स कितने होने चाहिए जब ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा? तो पर पर्सन ट्रीज की अगर पॉपुलेशन 422 यानी पर पर्सन 422 ट्रीज यदि होते हैं एज पर WHO नॉर्म, तो ये इको बैलेंस बना रहेगा, मतलब हमारी इकोलॉजी बैलेंस रहेगी। लेकिन भारत के अंदर पर कैपिटा ट्रीज की संख्या कितनी है का क्या हम बता सकते हैं? हम ठीक है यहाँ पर बात कर सकते हैं कि हम अरुणाचल प्रदेश में 80% ग्रीन कवर एरिया पर बैठे हैं, लेकिन भारत का एवरेज कितना होता है मैं आपको बता दूं कि पर पर्सन भारत में 28 ट्रीज हैं, होना चाहिए 422। 28 ट्रीज अगर भारत में हैं, आप कल्पना करिए क्यों नहीं क्लाइमेट चेंज होगा। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर सीक्वेस्ट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड यदि नहीं होगी तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? और यदि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो ओजोन की जो लेयर है वो डैमेज होगी कि नहीं होगी? और ओजोन की लेयर यदि डैमेज होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी कि नहीं होगी? और ग्लोबल वार्मिंग होती तो क्लाइमेट चेंज होगा कि नहीं होगा? हम आज बात कर रहे हैं। और इसलिए ट्रीज की पर हेड अगर 28 है, और आश्चर्य होगा आपको मैं यदि बता दूं तो जिस गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, वहां पर पर्सन 11 ट्रीज हैं। जिस सूरत में मैं रहता हूं वहां केवल 7 ट्रीज है। और आश्चर्य की बात आपको बता देता हूं, दिल्ली के पास में जो बहादुरगढ़ नाम का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जस्ट लगा हुआ है बहादुरगढ़, आई थिंक सो सब जानते होंगे, वहां पर ट्रीज की संख्या पर कैपिटा ओनली 1 है। जितनी वहां की पॉपुलेशन होते हैं ट्रीज हैं, हम कहां की तरफ जा रहे हैं, ये चुनौती है। और इसलिए क्लाइमेट चेंज की चुनौती यानी इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट के बारे में हमको कौन नहीं पता। आज बादल फटना कभी किसी ने सुना है? क्लाउड बस्टिंग किसने सुना था आज तक? हमने तो नहीं सुना। सर आपने सुना? अभी सुनने को मिला है क्लाउड बस्ट हो रहा है। और ये सुनने को मिल रहा है कि दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री है, रात का टेम्परेचर 5 डिग्री है। व्हाट इज दिस? हम तो अपनी गर्मी बचाने के लिए ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्लांट्स हैं जो नेचर में रखे हुए हैं वो तो इसको कभी सहन नहीं कर सकते। और जब प्लांट्स नहीं रहेंगे, एग्रीकल्चर में गड़बड़ होगी, खाने को कहाँ मिलेगा? जब खाने को नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और एयर क्वालिटी के बारे में हम सबको पता है। यानी आप कल्पना करिए कि जिस इंसान को जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, पहला सांस लेने के लिए हवा, वो पेड़ों से मिलती है, पेड़ नहीं है। पीने के लिए पानी, क्या आज हमको शुद्ध पानी मिलता है? हर घर में आरओ लगा हुआ है। खाने के लिए अन्न, क्या शुद्ध खाना मिल रहा है? हर एक में पेस्टिसाइड्स मिलता है, और इसलिए आज ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दे आर द इम्पैक्ट्स। और इसलिए अगर हमारा क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की बात करते हैं, आज का जो विषय है, तो ये किन्हीं भी कारणों से अब आता है मिटिगेशन। क्या है इसका? तो मिटिगेशन के ऊपर मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं कि अगर मिटिगेशन के ऊपर बात करना है तो हमको 3P पर काम करना पड़ेगा। 3P का मतलब है पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक मूवमेंट। ये खड़ा करना पड़ेगा, अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। और अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, अवेयरनेस बहुत सालों से चल रहा है, उनका पार्टिसिपेशन आवश्यक होगा, और पार्टिसिपेशन के बाद में उसको मूवमेंट बनाना पड़ेगा।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस प्रकार के यंग लीडर्स अगर आएंगे, और वो एनवायरमेंट लीडर्स चाहिए आज, अगर इस प्रकार के आएंगे तो देश में जरूर, और ये आशा की किरण लगती है कि जब इस प्रकार के यंग लीडर्स समाज में खड़े हो जाते हैं, समाज परिवर्तन हो जाता है। लेकिन पब्लिक मूवमेंट करना पड़ेगा, और ये करने के लिए फिर 3P करना पड़ेगा। और 3P है पर्सनल, प्रोफेशनल एंड पब्लिक। पर्सनल का मतलब क्या? मैं और मेरा घर, मेरी लाइफ स्टाइल, उसमें चेंज आया है क्या? प्रोफेशनल यानी मैं और मेरा प्रोफेशन जहां पर है वहां पर इस प्रकार का चेंज आया है क्या? और थर्ड थिंग है पब्लिक, यानी मैं और मैं जहां रहता हूं, मेरी कॉलोनी भी हो सकती है, मेरा गांव हो सकता है, मेरी सोसाइटी हो सकती है, क्या वो नेट जीरो है क्या? क्या सरकार की पॉलिसी बनाएगी? इसलिए ये करने के लिए हमको 3P करना पड़ेगा। और ये 3 पर करने के लिए 3 प्रोसेस हैं। वो 3 प्रोसेस ये हैं। एक होता है पॉलिसी सेंट्रिक। बात आता है कि इसका मिटिगेशन कैसे करें, तो एक पब्लिक सेंट्रिक करना पड़ेगा, पॉलिसी सेंट्रिक करना पड़ेगा कि पॉलिसी इस प्रकार की बने। बहुत सारी बनी हुई है और बननी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि वर्तमान टेक्नोलॉजी और हम डेवलपिंग कंट्री के बारे में कहते हैं, तो हमें विचार करना पड़ेगा। दूसरा पॉलिटिक्स सेंट्रिक। जो पॉलिटिकल सेंट्रिक क्या है कि इस पॉलिटिशियंस की विल पावर खड़ी करनी पड़ेगी। और थर्ड है पीपल सेंट्रिक, यानी हमको समाज के बीच में जाकर उनकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। ये 3P करनी पड़ेगी। अब ये 3P करने के बाद इस P के बारे में, जो जिसको पर्सनल बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं, उसके लिए AEL करना पड़ेगा। ये AEL क्या है? तो अगर मेरे लाइफ स्टाइल में बदल करना पड़ेगा तो 3 बातें करना पड़ेगा। पहला है एटीट्यूड। तो ये एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर को बदलना पड़ेगा कि मेरा एटीट्यूड नेचर के बारे में, पेड़ है वो, जिसको हमारे भारतीय संस्कृति में ये कहा, ये पेड़ नहीं है, ये वृक्ष देवता है, पूजा करिए, क्योंकि वायु ही जीवन है। वायु को जीवन क्यों बोला? वायु प्राण है। अब हवा को प्राण मानकर हमने उसको हमारे पंच महाभूत में स्थान दिया है, इसलिए क्षिति जल पावक गगन समीरा बोला है। इसलिए हमने नेचर को पेड़ नहीं माना, उसको भगवान माना, इसलिए पूजा करते हैं। शायद हमको आज के जमाने में लगता है क्या पेड़ के बारे में बात करते हैं, उसके प्रति कुछ लगाव ही नहीं, इसलिए एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। नंबर 2, उसके प्रति एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, उसके प्रति अपनापन। और अपनापन कहाँ तक होता था कि हमारी दादी नानी, हमारी बड़े लोग रोज चिड़ियों को दाना डालने के लिए जाते हैं। चिड़िया आपका क्या लगती है जी? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड चिड़िया? आज बात कर रहे थे, हमारी फैमिली है, लेकिन उसके प्रति एम्पैथी नहीं है। चींटियों को दाना डालना ये हमारी संस्कृति में था, चूहों को देना, सांप को पानी पिलाना, ये हमारी संस्कृति में, दूध पिलाना हमारी संस्कृति में है। एक किसान, सर बोल रहे थे, एक किसान जब अपने खेत से अपनी फसल को लेके जाता था, कुछ फसल वहां चिड़ियों के लिए, उनके लिए डालना, ये उनका भाग है। जब वो फसल हमारे घर में आती थी तो हम कहते थे ये चिड़ियों के लिए, ये चूहों के लिए ये है। और जब खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की निकालते हैं। ये है को एग्जिस्टेंस। और इसलिए हमको इस बात पर आना पड़ेगा। ये है एम्पैथी। लास्ट में है लाइफ स्टाइल। हमको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी। लाइफ स्टाइल बदलेंगे तब जाकर हमको ध्यान में आएगा कि इसमें सोशल चेंज लाना शुरुआत हो सकती है। और ये लाने के लिए अंतिम बात मेरी ये है कि हमको इसकी AMC करनी पड़ेगी, एनवायरमेंट की AMC करनी पड़ेगी। और AMC सब इंसानों को, हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। वो AMC क्या है? वो AMC है, पहला A, अवॉइड करना पड़ेगा। जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है उसको हमको अवॉइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ के लोगों को देता हूँ कि यहाँ प्लास्टिक की बोतल तो नहीं थी, कम से कम यहाँ किसी चीज को थैला भी अच्छा दिया है, नहीं तो वो भी प्लास्टिक का दिया जा सकता था। लेकिन वो क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है? आपको विचार करने के लिए मैं बता देता हूँ। जो ये A4 साइज पेपर है, कोई बता सकता है इसके अंदर कितना पानी है? एनीबॉडी कैन से? ये दृष्टिकोण जब तक नहीं आएगा तो आप सोचिए, इसमें वो वर्चुअल वाटर है कि इस पेपर में 10 लीटर पानी है, 0.27 मिलीग्राम पेड़ है, लकड़ी। जब 17 पेड़ करते हैं तो 1 टन दिस टाइप ऑफ पेपर बनता है। क्या आप सोच सकते हैं?
जब ये दृष्टिकोण बदलता है, इसलिए पहले करना पड़ेगा अवॉइड। क्या हम इसको अवॉइड कर सकते थे क्या? और अवॉइड करने का मतलब एक पेपर हम छापते, इसके ऊपर एक क्यूआर कोड होता, हम सबको कहता जिसको चाहिए क्यूआर कोड से ले लीजिए। हम अगर 1 टन पेपर यूज कर लेते हैं तो 17 पेट 40,000 लीटर्स पानी और 2760 यूनिट बिजली की खत्म करते हैं। क्या हम कभी इसका विचार कर सकते हैं क्या? ये है बदल। और इसलिए मैं अवॉइड, क्या हम अवॉइड कर सकते हैं क्या? दूसरा है मिनिमाइज, AMC, मिनिमाइज। अगर माना अवॉइड नहीं कर सकते तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? और यदि मिनिमाइज भी नहीं होता है, मिनिमाइज करने के बाद भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? ये क्रिएशन का मतलब है कि क्या हमारे घर का गीला कचरा कंपोस्ट में बदल सकता है क्या? दिस इज क्रिएशन। क्या हमारे फलों के छिलके बनकर बायो एंजाइम बन सकते हैं क्या? दिस इज क्रिएशन। और हमारे यहाँ पहले होता था, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे कपड़े मेरा छोटा भाई पहनता था, वो जब और हो जाता था उससे छोटा पहनता था, जब फट जाता था तो माता जी थैला बना लेती थी, और जब थैला फट जाता था तो पोछा बनता था। दिस इज रिसाइकल रीयूज। क्या ये संस्कृति कहाँ चली गई? विचार करने की आवश्यकता है। हमको ये लाने के लिए एक छोटी सी डिबेट, एक विमर्श समाज में स्थापित करना पड़ेगा, और वो है ग्रीन और हरित का। जो हमारे भारतीय संस्कृति, जैसे हम इंडिया और भारत की बात करते हैं, इंडिया कहते ही हमको एक कंपनी जिसने इस देश को गुलाम बनाया था, वो कौन सी कंपनी थी? कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी याद आती है, अंग्रेज याद आते हैं, गुलामी याद आती है, हम नकारा है ये याद आता है। लेकिन जैसे ही भारत की बात करते हैं तो हमको भारत याद आता है, हमें अपना इतिहास याद आता है, हमें अपना स्वाभिमान याद आता है। ठीक इसी प्रकार क्या हम ग्रीन और हरित के बारे में विचार कर सकते हैं क्या? और ग्रीन और हरित का विमर्श यानी नैरेटिव हमको समाज में खड़ा करके इस समाज के मानस को परिवर्तन करना पड़ेगा। यही मिटिगेशन है। और वो क्या है देखिए, जैसे ही हम ग्रीन कहते हैं, जैसे ही हम हरित कहते हैं, कितना हमारे परसेप्शन में चेंज आ जाता है। ग्रीन कहते ही हमको ध्यान में आता है क्लाइमेट चेंज, ग्रीन कहते ही हमको ध्यान में आता है 5 SDG गोल्स, ग्रीन कहते ही हमको ध्यान में आता है ग्लोबल वार्मिंग। ये सब प्रॉब्लम्स हमको ध्यान में आती है, ग्रीन मतलब दिस। लेकिन हरित कहते ही क्या ध्यान में आता है? तो हरित कहते ही हमको ध्यान में आता है होलिस्टिक एक्शन फॉर रिस्टोरिंग ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशंस। दिस मीन्स हरित, होलिस्टिक एक्शन, रिस्टोरिंग करना। किस प्रकार से करना? इंडिजिनस ट्रेडिशन। हमारी जो भारतीय परंपराओं के आधार पर हमको इस प्रकार के होलिस्टिक एक्शंस लाने पड़ेंगे, उसको बोला है हरित। और ये कहते ध्यान में आता है पंचमहाभूत, ये कहते ध्यान में आता है माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिव्याह, ये कहते ध्यान में आता है तेन तक्तीन वंजिता, मतलब कम से कम उपयोग करो। यही गड़बड़ है। और इसलिए ये ध्यान में आते ही जैसे ग्रीन बोलते हैं तो हरित की बात आ जाती है, वहां पर बचत की बात होती है, वहां खपत की बात होती है, वहां एग्जिस्टेंस की बात होती है, यहाँ को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। आप विचार करिए कि केवल ग्रीन और हरित कहते ही कितना चेंज आ जाता है। हमको मिटिगेशन करना है तो हमारी ये थॉट प्रोसेस बदलनी पड़ेगी, और ये थॉट प्रोसेस बदलने में बहुत सारी बातें आएंगी। मेरे को लगता है कि आज थोड़े वक्त का कम होने के कारण मुझे समय ज़्यादा मिल गया, ऐसा मान लिया जाए, या मैं ज़्यादा बोल गया, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन हमको अपनी थॉट प्रोसेस बदलकर बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा, और बिहेवियरल चेंज लाकर फिर हम कह सकते हैं कि जो देश सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम वाला देश था, जिस देश में ये गाया जाता था कि गंगा मेरी कितनी पवित्र है, जिस देश में गाया जाता था कि ये माता भूमि है, आज सोचिए जिस देश में वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, आज के सुजलाम इस देश का जल स्वच्छ है क्या? गंगा मेरी है, श्वास लेने के लिए हवा मेरी है, खाने के लिए अन्न मेला है। ये कौन सा सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम देश की बात कर रहे हैं? हम कौन से प्रगति की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां पर हर 5 मरीजों में 3 मरीज एयर और वाटर के कारण बीमार हैं? ये कौन सा डेवलपमेंट है?
ये कौन सा डेवलपमेंट है कि जहां पर हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही हो, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ना, डायबिटीज की संख्या बढ़ना, लोग कहते हैं भारत डायबिटीज का क्या बोलते हैं राजधानी होने वाला है। व्हाट इज दिस? ये डेवलपमेंट है। और जो नेचर का पुजारी, जो प्रकृति का पुजारी देश आज वो इस प्रकार की वहां पर कैसे हो गया, ये चिंतन करके हमको मिटिगेशन का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमें मैं से शुरू कर कर हम तक जाना पड़ेगा। हम का मतलब पूरा विश्व है, इसलिए इस देश में बोलते हैं वन अर्थ वन फैमिली, और इसलिए हमारा सबका वन फ्यूचर है। ये तीन बातों को ध्यान में रखकर ये मैं से हम की यात्रा ही क्लाइमेट जो चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं ये है। इतना कह के मेरी बात मैं पूरी करता हूँ। क्षमा करें मैं थोड़ा ज़्यादा बोला, मेरा स्वार्थ भी था। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय। Thank you so much, Gopal Arya sir. Thank you for your energetic speech and all the hurtful yet important factual data. And we hope that with the 3P and the AMC policy, GHG emission from soil planted to rise through soil amendment with reference to climate change, followed by gorging progress towards sustainability in NER. It is kind information for all the paper presenters that there will be limited time of 5 minutes as we are already running behind and we have to carry forward with the other sessions as well. Please. We need data, and in Arunachal Pradesh we have this data scarcity. So what I think, being a research scholar, data scarcity is bigger problem than climate change, because without data we cannot study climate change. To study the climate change more precisely or accurately, we need data, and we do not have data in Arunachal Pradesh or maybe remote locations like this. So I would like to know your opinions on this. Thank you. So you are talking. Surface water availability, that is one thing. It has reduced in some portion. In Tawang, the rainfall variation has increased. The rainfall pattern has increased. That's why the seasons are changing. Yeah. So to study all these things, we need data, more precise data, more accurate data to run models. So, for example, in case of rain that you mentioned, Yeah, precipitation. yeah. So, every place has got a meteorological department. Yes. You can get data from them. For research, I think that data is freely available from them. For commercial, I think you have to pay for the data. So that, and there are similar river water level, how much volume of water are coming into those rivers. So you will get the data. The only thing is that getting access to the data requires a persistence. So you will get the data, and meteorological department and water resource department, you just have to go to them and persist. वहाँ पे जाके क्या होता है? There is a difficulty in getting it from the people there. It's not readily available. There is a difficulty in that. It's not readily available. कुछ online है, लेकिन but once you know from where to get it, you will get it. So Okay. thank you. You have partly answered to my question. Right. My question is precisely not the meteorological data that is available in IMD website also. Right. And from Central Government Institute we can download it from free. Yeah. The point is, for example, I'm taking Itanagar. We have data from 1987 to 2022, but we have missing data cells as well. And because it is observed data, we don't know the accuracy of the data. My question is, in general, how to tackle the data scarcity? If I want to tackle climate change, I need to tackle data scarcity first. So I would like to know your opinions on this problem. So the thing is that if there is some data missing from there, there will be fewer than the data available, right? Yes. So you can model it in a way so that the model will create the data which is missing. Yes. That is a possibility. Other than that, I can't see any other possibility. Can I have the mic? Yes, sir. Next question.
Very, very important points you put forth in a very basic manner. I must also congratulate that young lady. Somebody said she is the Greta of India. Well, my name is Rakesh Mathur. I am from the tourism industry. I co-founded the Ecotourism Society of India with the Ministry of Tourism and United Nations Environment Program. It is now known as the Responsible Tourism Society of India. We were founded in 2008 and we continue to do whatever work we can because tourism, I shouldn't be saying it, is the largest producer of affluence and largest consumer of energy in any way, energy, water, whatever. Yes, I am admitting it. And I'm saying this because we have such young students here and I think the points you raised were so basic and so nice, which I actually have been saying the same thing for many years. But you need people to listen to you and to bring it into actual practice. I think, having said that, आपने बड़े अच्छे वो दिए वो प्लास्टिक के आप जो काटते हैं और उसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगा पान मसाले के पैकेट वो भी फेंकते हैं, कोई उठाता नहीं है. तो ये सब और टॉफ़ी जो टॉफ़ियाँ मिलती हैं पहले मुझे याद है जब हम छोटे थे they used to be available in wax paper coating but this plastic coating came later. So there are 2 or 3 points I would like to raise. One is I think we all people who are working in this area, and me in tourism, you in your area, you in your, must try and get the government to cut down manufacturing of these things at source. That is number one. So that is a suggestion I'm making. Number two, I would request you and I have been actually advocating that in every school right across India, from class 5 to class 10, there should be a subject, what I call the responsible citizenship subject, to be a responsible citizen. And it's not just about environment. People have to be taught discipline, they have to be taught energy conservation, they have to be taught water conservation, they have to be taught simple things like road rules even, and first aid and things like that. So, I don't know, I grew up in the 60s and 70s, I was in school in the 60s, and there was a subject called moral science, where all these things were taught to us. And coming down to your middle class values of reusing, and I think it is human greed which has spoiled it all, human greed to consume more and more. And what we need is to change mindsets of children through education. If you can educate children, believe you me, if not now, in the next 10 years or after 10 years, you will have a whole army of responsible children who will be coming out. सजेशन है आपका, बहुत अच्छा बोला आपने, एंडोर्स किया है, मैं सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ. मैं बॉम्बे में गया तो वहाँ पर ब्लॉगर्स एसोसिएशन के कुछ लोगों से मिलना हुआ. वहाँ पर जो सी बीच है उस पर वो डेली लास्ट 10 ईयर्स से हर संडे को ब्लॉगिंग करता है. मैंने ऐसे पूछा उनसे कि 10 ईयर्स से आप कंटिन्यूअस हर संडे ब्लॉगिंग करते हैं, कह रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन मैंने पूछा कि आप ब्लॉगिंग में जो प्लास्टिक को कलेक्ट करते थे वो इसकी वॉल्यूम कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? तो कह रहे सर बहुत ज़्यादा होती जा रही है, हर बार हम हर वीक में उसको क्लीन करते हैं. तो फिर मैंने कहा अगले वीक में क्या उससे भी ज़्यादा आ जाती है? तो मैंने कहा आप ज़िंदगी भर ब्लॉगिंग करते रहना, वो लोग बाग ज़िंदगी भर डालते रहेंगे. इज इट सॉल्यूशन? ब्लॉगिंग करना सॉल्यूशन है क्या? हाँ ना बोलिए सब लोग. है तो वो एक रेमेडी हो सकती है. सॉल्यूशन ये है कि वो डाले ना. ये जो हैबिट में चेंज आना है,
ये हैबिट में चेंज आना कि नहीं, मैंने डालना नहीं चाहिए। और मैं आपको एक एग्जांपल दे देना चाहता हूँ। आप में से कोई तिरुपति बालाजी गए हैं क्या? तिरुपति बालाजी अभी लेटेस्ट आप लोग गए हैं? अभी बहुत पहले, अभी इन दिनों में कोई गया हो 1-2 साल के अंदर? आपकी जानकारी के लिए, हम तिरुपति बालाजी जाते समय कोई प्लास्टिक बोतल साथ में नहीं ले जा सकते, कोई पॉलीथीन की थैली वहाँ पर डाल नहीं सकते, ले तो जा ही नहीं सकते। और कैन यू इमेजिन, पर डे 30 टन्स ऑफ प्लास्टिक वहाँ पर जाने वाले लोगों की बच गई। इट मीन्स एक महीने में 1000 टन्स ऑफ प्लास्टिक को आपने तिरुपति बालाजी में जाने वाले लोगों से बचा लिया। दिस इज हैबिट, ये हमको करना पड़ेगा। और इसलिए जो सर ने कहा वो बात सही है कि हमको कहीं न कहीं पॉलिसी सेंट्रिक, पॉलिटिकल सेंट्रिक और हमको पीपल सेंट्रिक पर आना पड़ेगा। इस प्रकार से मेरे को लगता है। बहुत अच्छा। और किसी के एनी क्वेश्चन प्लीज? सर प्लास्टिक, सॉरी, प्लास्टिक बॉटल के बारे में एक और बात कहूँ। गिव मी प्लास्टिक बॉटल्स, bring RO water in a jar which they kept in my room. So that is the habit we have to cultivate. And yeah, so I think these are things which we need to. तो लास्ट में यस कम ऑन, और फिर उसके बाद आपका है ना, आपने क्वेश्चन उधर उनको माइक देना पड़ेगा। First of all, I would like to say that I'm not great of India. I'm Lissipri of India. I have my own identity. I have my own name, own culture, and I belong to India. So I'm Lissipri of India. And the thing is, plastic is a really great product which humans have invented. The only problem is us, the human beings. So we just need to change our behavior to save our planet. Changing our behavior is the first step to save our planet. And I have been working towards, making our government implementing, the ways to save our planet, to conserve our nature and our environment. For example, last year in COP28 Dubai in UAE, ending the fossil fuels era. I just disrupted a very high-level session, planning session of the COP28 United Nations Climate Conference, where I raised my voice, my concerns, because I was very mad at our leaders because वो कुछ और बोल रहे थे लेकिन reality में तो कुछ और ही हो रहा था, और इतना गुस्सा आ रहा था कि I did not even care what would happen to me, the consequences that I will face after doing that protest and disruption of that high-level plenary session. फिर मैंने protest किया, protest करने के बाद COP28 is a 2 weeks event. फिर उसने एक और day extension किया. फिर finally जो हमारे goals are that we have been fighting for, to end the fossil fuels, like एक target year, we will हम अपना ये pursue कर रहे थे. फिर finally they extended a date, and उस day पे that was the most crucial day, and finally it was a big win for us, the climate activists and environmentalists, because they finally, all the state members of the United Nations finally agreed to end the fossil fuels by the year of 2050. So this is the power that we, the young people, have, that we all have. It's just that the implementation is left. If we all do our best in implementing our goals, then we would be unstoppable. And another world, another better world would be possible. So change starts from ourselves, then our family, then our neighborhood, then our community, then our state, then our country, then the whole world. So change starts from ourselves. So let's work together unitedly. Should we? Yes or no? Yes. I can't hear it. Yes. Yes, we have to work together. They have they have put up a 10 years or 15 years, I forgot the exact date, to find solutions for like the alternative for plastics. So plastic is used in packaging industries in a huge way. So one of the areas that you could reduce the use of plastic is by changing the pattern of use in the food industry. So like you said, पहले butter paper में toffees मिलते थे हमको. Even
दुकान से हम लोग जब जाते थे तो पेपर बैग्स हुआ करता था। हम लोग खुद, आई रिमेम्बर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, न्यूज़पेपर से हम लोग थैली बनाते थे। तो दैट हैज स्टॉप्ड बिकॉज यू गेट इट रेडिली। और थैली क्या है, गोंद क्या होता था, वो आटे का गोंद होता था, उसी से थैली बनाते थे। हार्ड पेपर से वो उसका बॉटम रहता था और साइड में ये उसका थैली। और दुकान में लाइक एज अ चाइल्ड दुकान में हम लोग बेचते थे कि आप ये यूज कीजिए। अब बहुत कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन घर में तो न्यूज़पेपर रहता था ना, तो वो उससे। लेकिन आजकल कोई नहीं करता। और एज पेरेंट्स शायद हमारा भी फॉल्ट है, हम लोग इनकरेज नहीं करते हैं हमारे। लाइक आई हैव अ डॉटर, तो कभी उसको मैंने बताया नहीं कि मैंने खुद ने थैली बनाई कभी लाइफ में। तो that's the, I think, but the government is making changes, but an alternative has to be found. And plastic as a product, I have no complaints against plastic as a product. The problem is its use. Uska use and reuse and ultimate disposal of the plastics. तो ये पूरा साइकिल अच्छे से बनना पड़ेगा, तभी होगा। लेकिन आप जैसे कुछ प्रोडक्ट्स है, इट्स अ पॉलीमर आफ्टर ऑल। कुछ प्रोडक्ट्स है जहाँ पे बोलते हैं कि पूरा पेपर सब प्लास्टिक है, एवरीथिंग इज, द होल पैकेजिंग इज प्लास्टिक, लेकिन उसका जो ग्लू है दैट इज ऑल्सो प्लास्टिक। तो ये आपको ये करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। Only two questions. Recycle uses means we can say is the way it means from pollution something. So I just want to know about that initiative, ways and ideas means how to not pollute everything. Summit. I am middle graduate from Lakhimpur Girls College, Assam. I am highly appreciative about the AMC principle, that is avoid, minimize and creation. Thank you, sir. I have a question to Mohammed Afin sir regarding millet. You say millet absorbs carbon dioxide highly. So I have a query, how it can be cultivated in Assam and where it is available? How much extent it absorbs carbon dioxide? See, millet is a C4 plant. You must be aware of that. So, and rice is a C, and release less at night. Okay, so that is the advantage. Millet is already being grown in Assam. If you contact NABARD has a project for millet cultivation. Even all the state departments have been instructed to encourage millet plantation because it requires less water. The millet grains and the flour from millet is much more healthier than wheat. So ultimately, it's a incremental advantage that you have in all areas. It's like rice, sir. Pardon? It is like rice. It's different to rice. It's different to rice. The millet, the way you eat it is different. We are not used to it. From Assam, we are not used to it. But I have started consuming millet for my health only. Okay, thank you. Here. Well, just before leaving the dais, I would like to say even I am working on puts together. We can definitely deal with this management of waste in any cases. So before winding up the program, I would like to call our chairman sir for this session, Gopal Arya sir, for vote of thanks. सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहता हूँ यहाँ की यूथ जो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज और इस प्रकार की इस डिस्कशन में इतने अच्छे से भाग लिया। तो थैंक यू फॉर ऑल यूथ्स। क्या सब लोग उनको क्लैप कर दीजिए जरा एक बार, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में तो आपको ही सब कुछ करना है।
दूसरा, मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग जो रिसोर्स पर्सन्स के नाते सीनियर लोग मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना कंसर्न जमा कर इसके लिए यहाँ पर आए हैं। इसने वहाँ जाकर भी चेंज करा दिया। दिस इज़ द पावर एक्चुअली, हमको ऐसे ही आना पड़ेगा। तो और इन्होंने एक बहुत जो की नोट हम सब के लिए भी है जो इन्होंने दिया है, उसको ही मैं अंत में कहकर अपना रहूँगा कि अगर चेंज लाना है तो अपने से लाना पड़ेगा, मेरे से लाना पड़ेगा, मेरे घर से लाना पड़ेगा, देन कम्युनिटी से लाना पड़ेगा, तब चेंज आएगा। सरकारों के चेंज परमानेंट नहीं होते, प्लीज माइंड। आज सरकार किसी की है, वो कुछ पॉलिसी लगाएगी, दूसरी सरकार बदल देगी, फिर हम रोते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। उसके लिए हमको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और शायद आज वो एक लास्ट स्टेज आ गया है कि हम सबको क्लाइमेट के लिए सबको लगना है। और अंतिम मेरा एक बात ये है कि हमको इको टेररिज्म से इको टूरिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। अभी इको टेररिज्म इतना ज़बरदस्त हो गया है कि आप घर में ठीक नहीं रह सकते। जब आपको हर श्वास के अंदर जहर मिल रहा हो, आपको पता होना चाहिए दिल्ली में एक व्यक्ति की आयु 12 से 15 ईयर्स कम हो गई है ड्यू टू दिस पॉल्यूटेड एयर और वाटर। आप सोच सकते हैं कि जहां पर एज ही खत्म होती जा रही हो, ये इतना बड़ा टेररिज्म है कि हम बाहर पाकिस्तान और चाइना से तो क्या लड़ेंगे, पहले अपने घर में लड़ लीजिए प्लीज। और इसलिए इस इको टेररिज्म को इको टूरिज्म में बनाने के लिए हमको इकोप्रेन्योरशिप लाना पड़ेगा। और इकोप्रेन्योरशिप हर चीज में आ सकता है, इसलिए ये आगे का विषय आएगा मेरे ख्याल से सेकंड सेशन में। लेकिन मेरे को लगता है कि इतनी सारगर्भित चर्चा वो भी अरुणाचल प्रदेश जैसे जगह से हो रही है, निश्चित ही ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक सोचने के लिए दिशा होगी। इतना कह के मेरी बात पूरी करता हूँ। सबको धन्यवाद। भारत माता की जय।